Hey everyone, I hope you're doing good. Welcome to yet another video. So, this video will be about perspective, where I'm going to demonstrate and basically teach from basics how to create a stage or a set where few people are interacting with each other, okay, in a story type setup. And also, I'm going to draw an object. Now, there's a difference between the approaches of these two things. So, let's start. अब देखो पर्सपेक्टिव जब भी तुमने पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा या फिर ऐसा तुम्हारे सामने आ गया होगा एकेडमिकली 1.2.3.45 एंड सो ऑन पर्सपेक्टिव्स सीखते वक्त. Now these 1.2.3 point perspectives are great for understanding the rules. Basically we are trying to mimic the three-dimensional world on a two-dimensional sheet. तो ये कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें लगते होंगे कि सेंसिबल हैं और दे मेक सेंस. बट द पॉइंट इज कि ये जब आप अप्लाई करते हो अपने अपने ड्राइंग्स में तो ये इतने हेल्पफुल नहीं होते. तो आई विल ट्राई टू मेक इट इवन मोर सिंपल. नाउ अगेन योर पर्सपेक्टिव skills, your anatomy skills, your understanding of forms, all these are great to create good visuals, but your drawing is totally based upon your ideas. तुम्हारा story, तुम्हारा idea तुम्हारे drawing को drive करता है. That should be the main thing on which you focus. Okay, and end result should be aesthetically pleasing, which these tools do help to create, but these are not the only things that will help you make an aesthetically pleasing drawing. उसके लिए इतना कुछ पर्सपेक्टिव बहुत डिटेल में आना चाहिए, या फिर ह्यूमन एनाटॉमी बहुत अच्छे से आना चाहिए, फॉर्म्स का बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. ये इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. योर ड्राइंग शुड बी वेल कंपोज्ड, इट शुड बी नीट एंड टाइडी, एंड इट शुड बी क्लीन एंड कॉम्प्रेंसिबल. बस इतना ही चाहिए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत सुपर रियलिस्टिक ड्राइंग वहाँ करके आओ. सो कमिंग बैक, so the first thing in perspective is whatever goes away from you, away from the viewer, it becomes smaller. Whatever comes towards you, it becomes big, huge. Okay, अब देखो हाउ मच ह्यूज एंड हाउ मच स्मॉल. ये पर्टिकुलर रूल को अपन डिस्टेंसिंग बोलेंगे. डिस्टेंसिंग मतलब जो दूर जा रहा है वो छोटा हो जा रहा है, और जो नजदीक आ रहा है वो ब्लो अप हो जा रहा है, वो बड़ा हो जा रहा है. पर इसमें प्रपोर्शन का भी बहुत बड़ा गेम है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज टू पाम्स आर ऑफ सेम साइज, बट दे आर सेम साइज बिकॉज दे आर ऑन द सेम प्लेन. जैसे ही ये पाम आगे आता है, इवन दो इट्स ऑफ द सेम साइज, ओके, इट blows up, the size becomes bigger. ठीक है, so what happens is plane change हो रहा है. plane change हो रहा है इसलिए size change होता है. so let's say you have to draw two human beings, okay, in a scenario. I hope this is recording. हाँ, record हो रहा है भाई. चलो, तो अगर दो human beings बना रहे हैं अपन, if this is the frame, let's say one is over here. Okay, this is called a cowboy shot because उसके वेस्ट तक का शॉट है हमारे पास. लेट्स से ही इज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस हियर. है ना, lots of butterflies. See, these are the things that are important for your visuals, not the perspective and human anatomy. या इस drawing में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक story है. Anyways, अगर एक और human being बनाना है तो first of all you have to figure out where is your horizon. horizon in the sense जहां पर कहते हैं जमीन और आसमान मिल जाता है, पर वो कहाँ मिलता है? जहां पर आपका जो आई लेवल होता है वो जहां पर होता है, वहां पर horizon लाइन अपने आप आ जाती है. ठीक है, let's say the horizon is somewhere here. This is the horizon. This is a tip. Never put the horizon in the center. ठीक है, either put it on the top, which in your case you don't have to use that complicated visual composition.
पुट इट इन द लोअर हाफ एट द बॉटम, ठीक है, बहुत नॉर्मल लगता है, होराइजन हमेशा जमीन पे हो ज्यादा बेहतर, ठीक है। तो इफ द होराइजन इज हियर, सी इट इज कटिंग this part of the character, the other character that you will make, okay, उसके साथ भी वही होना चाहिए, वो होराइजन लाइन एग्जैक्टली वहीं से पास होनी चाहिए उस कैरेक्टर में भी, गिवन दैट ये दोनों कैरेक्टर्स सेम यू नो हाइट के हैं, ठीक है। सो यू सी दिस इज अ ट्री, प्यारा सा। तो आपने अपने आप एक ऐसा सिनेरियो बना दिया जहां पर दो कैरेक्टर्स एक फ्रेम में है और एक ही पर्सपेक्टिव यू नो एंगल उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ देयर इज अ कैरेक्टर हु इज रियली फार अप फ्रॉम दीज टू, अगर वो इतना छोटा है तो भी तो horizon line will pass from there only, ठीक है, सबका वही वही होना है, ठीक है। So this is how you basically create a setup, इसको staging बोलते हैं। Now same thing, if you are putting the horizon somewhere here, this is the most demonstrated thing on YouTube। अगर तुम टाइप करोगे कि हाउ टू ड्रॉ अ सिनेरियो विद सो मेनी पीपल इन पर्सपेक्टिव, ये सबसे पहले आता है, ठीक है। ये आई लेवल दे सेट द आई लेवल हियर एंड बेसिकली everybody's eyes overlap there. The funda is कि wherever the horizon line is, it should be common it should be common for all of the characters, ठीक है। और मैं इतने रफ फिगर्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिस इज द स्टेज वेयर वी आर जस्ट आइडिएटिंग, ठीक है। तो see, this is how you can create human figures in perspective. Where is the lasso tool? हाँ, यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द सुपर बेसिक वे ऑफ डूइंग इट। पर अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड विजुअल के साथ जब काम करते हैं तो वी नीड टू सिंप्लीफाई दीज थिंग्स इनटू डुएबल स्टेप्स, ठीक है। अब देखो, इन रियल लाइफ there are three basic planes: the foreground, the middle ground, and the background, okay। So whatever the story, whatever the main incident of your story is, it has to take place at some or the other plane, ठीक है। Here in this drawing, this is that incident, okay, जहां पे all the butterflies are sitting, sorry, on all the butterflies are sitting on his hand। इसमें कोई स्टोरी नहीं है तो फिर है नहीं, बट यू विल डील विद स्टोरीज, यू विल डील विद आइडियाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट द आइडिया, फिगर आउट द स्टोरी एंड एग्जीक्यूट इट इन टर्म्स ऑफ फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड। द रीजन इज कि बहुत कम मेहनत आपको बैकग्राउंड में करनी है, आपको वहां ज्यादा मेहनत करनी है जहां पर आपका स्टोरी हैपन हो रहा है, जहां पे हो रहा है वो सारा सारा वृतांत, सारी घटना हो रही है,
ठीक है, वहां पर ज्यादा काम करना है, वहां पर ज्यादा डिटेल्स डालने हैं. आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम. ओके, तो अगर तुमसे कोई ड्राइंग फटाफट खत्म नहीं हो रही है, टाइम में खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब तुम उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम डिटेल ज्यादा कर रहे हो, इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में हो नहीं सकता. ओके, ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ अ सिनेरियो वेयर फ्यू पीपल आर फाइटिंग, and I mean two people are fighting and other people are watching them. So here, if this is, you know, this is your frame, I'll take care of the composition. Rule of thirds, you divide your frame into 3 equal parts horizontally and vertically, and it is said that where these lines, you know, meet, those are the points which are closer to the eyes of the onlooker. That's where the, you know, viewer sees first. So let's say, you know, I have these people are yelling at each other. So see, the moment, you know, I draw just 2 characters and these 2 characters are on the same plane, the moment I drew them, they have covered a particular amount of area. Now I don't have to draw there. Okay, तो यहाँ पे this much area they have already covered na. I'll change the color. So this much area they have already covered. So if this is my foreground, very less is left for me to fill. Okay, so I'll just go back. Okay, so even if I just put few people over here, okay, and remember, even if you mess up with proportions little bit with individual characters, it's all right, because no one is of the same height, weight, you know, everybody comes with different shapes and sizes, so that is okay. पर बहुत ब्लंडर नहीं होना चाहिए, लिलीपुट नहीं बना के आना है. Okay, so if you see this drawing, 2 people are fighting, rest are watching them, and since, you know, these people are in background, I don't have to, you know, worry about them much. Later I'll go and, you know, put the details. This is how you basically ideate. Okay, okay, so you can easily see that, you know, the focus is on these two, 1 and 2 characters, rest are the spectators. And one more thing, never put, you know, any kind of detail around the face of your main characters. Okay, you should never do this. If this is the face of your character, okay, never draw, you know, overlapping stuff like this, like this. Okay, don't disturb the view or the vision of the viewer. It should be clean like this. Chalo. Okay, so this is how you basically compose. This is how you think of the horizon and put your characters roughly interacting with each other in perspective. Now overlap, yes. So if you see, you know, in this particular drawing only, there is an overlap between the foreground with these 2 characters and the background people. Okay, this is here's an overlap.
This is where things are overlapping. But overlap should be understood in its own way, because overlap is important when you know uh, an individual character only behaves in a certain way. For example, if look at me, if I'm doing this, my hand is overlapping my torso. Okay? If the camera is capturing me from the top, ऐसा कुछ, so my head will overlap my torso. If the camera is at the bottom, my torso is going to overlap my head. This has been covered in one of my previous videos. So this is also important in product design as well. Product design में form बहुत important है, लेकिन perspective ऐसे ही काम करता है form पर भी. तो आप देख रहे हो यहाँ पर we are not talking about 1 point, 2 point and 3 point at all. We are just talking about the idea. We are talking about the focal points, composing and putting your characters roughly over there. Okay. ठीक है. Now what is the major difference between this, doing this, and drawing your forms? Okay, this is basically just a cube. Okay, very simple, but there is a difference. So the difference is lensing. Now what is lensing? We are experiencing this world around us through our eyes, and our eyes have a lens. The focal length of the lens is 22 mm. ठीक है. अब 22 mm का लेंस हमारी आंखों में है. 22 mm का लेंस अपने आप में एक वाइड एंगल लेंस होता है. वाइड एंगल लेंस ताकि हम सारी दुनिया का एक्सपीरियंस कर पाए अच्छे से. अब अगर किसी वाइड एंगल लेंस के सामने बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स रख दोगे तो द अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन यू विल सी विल बी वे टू मच. सिंपल एग्जांपल है, अगर आप अपने हाथ में एक छोटा सा फोन अगर यूज करो और फोन रख दो या रूबिक्स क्यूब रख दो, तो वो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा. उसके जो एजेस होंगे, इफ यू होल्ड अ रूबिक्स क्यूब, उसके जो एजेस होंगे दे विल बी पैरेलल. ठीक है. बट इफ यू स्टैंड अंडर अ स्काई स्क्रेपर, उसका जो डिस्टॉर्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा. द स्काई स्क्रेपर टॉप विल बी वेरी स्मॉल, ओके, एंड द बॉटम विल बी वेरी बिग बिकॉज ऑफ द शेयर चेंज इन द साइज. द लेंस इज सेम, ठीक है, पर साइज चेंज हो रहा है, तो फिर व्हाट इज हैपनिंग, डिस्टॉर्शन इज चेंजिंग. So if you are making products are not that big until unless they are. If you're drawing a car में तो obviously there will be a distortion because car is way bigger than you, है ना? So if you are drawing small objects, even if it's a mixer or an iron, उसमें you don't have to put a lot of distortion. ठीक है? Makes sense, I guess. So if you see this object, this form here, बहुत distortion नहीं है. These two lines are parallel. ठीक है? Parallel. So this is relatively a small object. Okay. So when you are drawing products, distortion should not be that much until and unless the product is bigger than the human size, human being itself. Okay. Let's draw a shoe. So whenever I have to draw an object, I just don't draw directly into 3D. ठीक है? I understand the form first. तो पहले तो मैं उसका एक एंगल, एकदम प्रोफाइल एंगल, प्रोफाइल मीन्स द एक्सट्रीम साइड, दिस इज प्रोफाइल, आई ड्रॉ दैट एंगल. ओके. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ अ शू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट फ्रॉम द प्रोफाइल फर्स्ट. ठीक है. एंड दिस इज द सोल. I'll make it a little bigger. I want to make it dunks, proper Snickers, and 1, 2, 3.
Okay, so right now you won't see any kind of form in this because it's from a flat angle, which is the side angle. Sorry, the profile. Now if I have to draw this from a particular angle, I know that it is encompassed into a rectangle. So rectangle को 3D में लाओगे तो वो एक cuboid बनेगा, है ना? अब cuboid बनाना है तो you know it's a shoe, it's relatively small. I mean you can hold a shoe in your hand, so the distortion is not that much. है ना? अब इतना ज़्यादा distortion नहीं है यहाँ पे. So inside this have to fit that. First I'll start with the sole. ठीक है? कितने हैं? 1 2 3 4 5. 2 3 4 5. Okay. And the design goes like this. And then, yep, done. Yep. Yeah, so very similar approach will be for indoor situations as well. Yeah, let's say a little kid is studying. So indoor में क्या होता है? Horizon is a little invisible because it's very far. Horizon, it has to be very far. But in your indoors, in your rooms, you have walls. You have walls which will meet the ground, right? So you have to draw something like this. Okay, these are the walls. This is the floor. ठीक है? Or again,
instead of doing this, first decide the story. There's a kid who is studying and who's doing his homework on his table, right? So if again, if this is my, you know, focal point, uh, you know, so the kid needs to be here. Yeah. Roughly, we need to draw. Okay, if this is the table, this much area is already captured or occupied by, okay, by the character. This character who's telling you the story, right? This much area. Now we have a foreground. This is the foreground. Rest is background. Rest, everything needs to be in the background. Okay, so everything is like this. I mean, this is the place where it is very easy to fix things. यहाँ पे कुछ books रखे हैं. ठीक है. Then maybe here is a trophy. Okay. Maybe his bag and all here. More books. Here, right? Now if I blow this up, you can see, this is the composition. Nothing near the head. Okay. Still you have put enough details. All you have to do is, put the right amount of details in your characters and all, and you're done. So remember, your tools don't drive your visual. Your tools will just help you create a visual. Even if you are not good at these tools, you can still come up with a nice drawing. Make sure the composition is well, make sure the lines are good, line quality is good, everything is nice. You don't, mess up your answer sheet. You don't mess up your paper. I mean, don't smudge it here and there. Still you can pull off things. Okay, the story, the idea is important, and how easily it is comprehensible to the viewer, whosoever is seeing your visual. If it is understood by that person, it's a win-win situation. That's it. That's all you have to do. Okay. So okay, so if this video was helpful, like it, subscribe, and tell me how was it in the comment section. Okay, and good luck to all of you. Cool. Bye.